Hello everyone and welcome to this video series on investment banking interview tips and strategies. In this video we want to address one very important question which is generally asked in the interview, and this is generally the first question that is asked from the candidates, and it is, tell me something about you or introduce yourself. And I have seen people that they are very ill prepared for this first question. What happens, they do not plan their introduction and they speak whatever comes to their mind at the time of introduction itself, at the time of interview. So their introduction is not polished, it is not planned, so they don't make a positive impression in the interview. So we want to address this problem in this particular video. So this is the third video in this placement series, and in the first video what we have done, we have talked about how to plan your interview for investment banking. We discussed in this video what are the topics that you want to discuss, how you have to plan that. We also discussed in the second video that how you have to answer the question, why should we hire you. Please do watch these videos, and many people have appreciated these videos, and if you watch that, I'm sure that you will also like it. So link of these two videos have been given in the description, please check it out. So now let's understand what we are going to answer here, how to give a perfect introduction for positive impression in the interview. This is what we want to understand in this video. Okay, so keep in mind the following things when you are giving your introduction. You don't want to speak too fast. Don't speak immediately when the recruiter asks you to tell something about you. Right? Take 2-3 seconds of pause and then speak. And do not just complete your introduction. Rather, communicate with the recruiter and tell him certain important things that he would like to listen. And include those skills, experiences, or internships which are relevant to the profile in your introduction itself. How you have to include, wait for a few minutes, I'll be coming to that in this particular video. I'm going to give you a sample introduction within this video, and I'm sure that you will like it. So the first point, that you don't want to speak too fast. You want to go at a comfortable pace and you want to communicate with the recruiter, right? Try to address the person 2 or 3 times in your introduction by simply saying sir or ma'am, right? Do not include each and everything that you have done in your life in your introduction. It happens that you have done something in your life which is very important for you. You came first in cricket. You did very well in some cooking competition in your school, or you did some presentation in IIMs, but it is not related to the profile you are applying for today, then do not include that in introduction. Introduction has to be relevant and it has to be connected with the profile that you are applying for, right? Keep your introduction concise, means small, short. Keep it very simple. Keep it connected and keep it relevant. This is very important. It has to be relevant to the profile. When you are giving your introduction, keep these principles in mind. And of course, you have to be confident and you don't want to panic. And when you become confident, when you have studied well, you have worked on those particular projects and skills that the recruiter is looking for, and your communication is good enough, then only you will not panic. Otherwise you will be nervous and you will panic throughout your introduction, throughout your interview also, right? So I'll be giving you a sample introduction which you can change according to your requirement, but only few things here and there you can change. Rest, try to keep the introduction the same way I'm giving you in this video. I'm assuming you are just a BCom or just an MCom or just an MBA finance, or MBA finance plus some relevant experience, MBA finance plus irrelevant experience. Whatever is your situation, whatever is your qualification,
you must have the following skills. Skills like financial modeling and evaluation, skills which are required by the recruiter for this particular profile. Okay, whatever your qualification is, if you don't have the required skills, there are very less chances that you will be selected, right? So try to work on those skills practically which are required by the recruiter. And for core finance profile, financial modeling and valuation are the core skills which will be required for the profile of core finance. Let's say equity research, investment banking, project financing, valuation, merger acquisition, or credit research, or other core finance profiles, right? Now I'm assuming that you are a BCom graduate, and how you have to give your introduction, let me tell you. So let's suppose the recruiter says, tell me something about you. Start with this. Sure, sir. Keep a smile on your face. Sure, sir. My name is Manoj Kumar. I am born and brought up in Sonipat, but for the last 5 to 6 months, I have been living in Delhi. I have done graduation in commerce in so and so college in so and so year. During my graduation, sir, I learned a lot of things related to accounting and finance. But to become more employable for this kind of profile, I have done a course on financial modeling and valuation. And in that course of 3 months, I learned exactly the same skills which you require for this profile. For example, sir, you need the knowledge of financial modeling and valuation. In this course, I have prepared multiple financial models of different companies. I also did the valuations of companies using different techniques like DCF valuation, trading comps, and transaction comp. And not just financial modeling and valuation, but I also learned how to do merger acquisition analysis, industry research, company profiling and pitch book, LBO analysis, and also project finance. And sir, just to give you an example, I have prepared the financial models of Netflix and McDonald and Apple. And I also did the valuation of these companies using the techniques I told you, DCF, trading comps, and transaction comp. And I also did the LBO analysis of a company called Kellogg's. I prepared the company profile of Tata Motors, and I also prepared the pitch book of few companies. And I also did the project analysis of solar power project and real estate project. Other than this, sir, I also did the industry analysis of telecommunication and automobile sector. Sir, these are the certain projects and skills which I wanted to share with you. If you want me to speak on something in detail, then please let me know. अब इसमें मैंने क्या किया, अपना इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया है, मैंने अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं किया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन कम्युनिकेट किया. अपने इंट्रोडक्शन में 2-3 बार मैंने सर करके उनसे बात करी, और मैंने अपने इंट्रोडक्शन को उनकी जो प्रोफाइल है उसमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उनके साथ कनेक्ट करके बताया. ये भी बता दिया कि ये टाइप के मैंने प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं और ये चीज़ें मैंने सीखी हुई है और प्रैक्टिकली किया हुआ है. आप इसी इंट्रोडक्शन में 2-4-5 लाइनें और ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन रेलिवेंट रखना है, इधर उधर की फालतू की बातें नहीं करनी है. कौन सी फालतू की बातें? फॉर एग्जांपल, मैंने अपने एमकॉम के अंदर या बीकॉम के अंदर कुछ इंटर्नशिप की होंगी, मैंने इसमें इंट्रोडक्शन में कहीं नहीं बोली. मैंने भी कहीं प्रेजेंटेशंस या सर्टिफिकेट रिसीव किए होंगे, किसी के बारे में कोई बात नहीं करी. किस पे बात करी? जो रिक्रूटर की रिक्वायरमेंट है. अब मैंने भी क्रिकेट में फर्स्ट प्राइज जीता था इंटर कॉलेज कंपटीशन में. आई आल्सो डिड पार्टिसिपेट इन इंटर यूनिवर्सिटी बैडमिंटन चैंपियनशिप. उन सब के बारे में मैंने बात ही नहीं करी. मैंने इंटर कॉलेज जो प्रेजेंटेशंस होती हैं उनमें भी पार्टिसिपेट किया, और मैंने अपने जो कॉलेज फेस्ट होते हैं उनमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया. वो सब चीज़ें मैंने कहीं अपने इंट्रोडक्शन में नहीं बोली. क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है एक इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए. मैं उसको रेलिवेंट रख के यूटिलाइज करना चाहता हूँ. मैं अपना इंट्रोडक्शन रेलिवेंट रख के इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहता हूँ, और ये जितनी भी मैंने बातें बोली वो सब उसके दिमाग में जानी चाहिए रिक्रूटर के, ताकि वो इन्हीं से संबंधित मुझसे सवाल पूछे. ये इंपॉर्टेंट है. मैं नहीं चाहता कि वो मेरे से क्रिकेट के बारे में पूछे, बैडमिंटन के बारे में पूछे. मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन के बारे में बात करें. ऐसे मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो स्टूडेंट्स वहां जाकर के कोई उन टॉपिक से बात करते हैं जो रिक्रूटर के रिक्वायरमेंट नहीं होती है.
तो आपका 20 मिनट के इंटरव्यू में कई बार 10-15 मिनट का डिस्कशन उन्हीं टाइप के टॉपिक्स पे चला जाता है जो आपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड किए, जो कि प्रोफाइल से रेलिवेंट ही नहीं है। तो क्या होता है, it looks like you are not focused for this profile. When you are not focused, you are not dreaming for this profile, you are not living only for this profile, then why you should be selected? I think I'm making my point clear, right? So जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया है वो बीकॉम एमकॉम के लिए बिल्कुल सेम रहेगा, आप एक दो लाइन इधर उधर कर सकते हैं। सेम आपका एमबीए के लिए रहेगा कि आपने बीकॉम के बाद एमबीए किया और एमबीए में आपने बहुत कुछ सीखा फाइनेंस में, but you wanted to make your career in core finance profile, so you upgraded your knowledge by learning financial modeling and valuation. उसके बाद बाकी सारा इंट्रोडक्शन वही रहेगा। या मैं एक बार इसका इंट्रोडक्शन देके दिखा देता हूँ कि कैसे रखेंगे आप। जैसे रिक्रूटर कहता है कि टेल मी समथिंग अबाउट यू। श्योर सर, सर माय नेम इज मनोज कुमार, आई एम born and brought up in Delhi, but for the last 3-4 years I have been living in Mumbai only. I have done graduation in commerce and I also did MBA in finance from Delhi University. After my MBA, I wanted to make myself employable for uh, this kind of profile for which I am applying. However, in my MBA finance, I learned a lot of things related to finance and capital market and security analysis. But to upgrade my knowledge in investment banking, I joined a training program on financial modeling and valuation. In that particular course, I actually learned the same skills which you require for this profile. Like sir, I learned how to prepare financial model for different companies absolutely from scratch. I also learned how to do the valuation of companies again absolutely from scratch, and I prepared multiple financial models like this and this. I did the valuation of all these companies using DCF trading and transaction counts. I also sir, आप समझ में आ रही है मेरी बात कि मैं कर क्या रहा हूँ? एक या दो लाइन मैंने चेंज करी है, बाकी सारा फोकस वही फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन पे रखा है। ठीक है, इस पूरे इंट्रोडक्शन में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी बात को स्लोली रखेंगे, और इतना भी स्लो नहीं कि सामने वाला बोर हो जाए, बट बहुत फास्ट नहीं जाना है। कई बार क्या होता है, बच्चे मेरा इंट्रोडक्शन याद कर लेते हैं और इसे रट लेते हैं, और वहां जाकर के इतनी स्पीड से बोलते हैं इंटरव्यू में कि सामने वाला कुछ भी पूरे अच्छे से समझ नहीं पाता है, और ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका एमबीए फाइनेंस डिग्री है और रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो आप क्या करेंगे? आपका फोकस रेलेवेंट एक्सपीरियंस पे रहना चाहिए। ठीक है, कि मैंने एमबीए फाइनेंस किया है, उसके बाद मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिल गया और इस पर्टिकुलर कंपनी में मैं वही काम कर रहा हूँ जैसे आपको अपनी कंपनी में कराना है। जैसे कि मैं मेरी कंपनी में कंपनीज की वैल्यूएशंस करता हूँ ट्रेडिंग फॉर्म्स और ट्रांजैक्शन के थ्रू, सेम सिमिलर काइंड ऑफ वर्क आई विल बी डूइंग इन योर कंपनी आल्सो, एंड माय नॉलेज of my previous experience will definitely help me in this profile. Along with this, I have also done a training program. In that program, I have learned additional skills also. For example, not just financial modeling and valuation, but also LBO, merger acquisition, project financing, company profile, pitch book. These are some additional skills which I carry along with me. And sir, this is what I wanted to share with you. ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अगर आपका मान लीजिए एमबीए फाइनेंस है बट इररिलेवेंट एक्सपीरियंस है, इसमें सिर्फ 2 ही लाइनें चेंज करनी है। मैं बताता हूँ क्या, इसको मैं पूरा इंट्रोडक्शन देकर दिखाता हूँ, सिर्फ फॉर्मेट वगैरह नहीं बताता हूँ, पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं। सो रिक्रूटर कहता है कि टेल मी समथिंग अबाउट यू। श्योर सर, सर माय नेम इज मनोज कुमार, आई एम फ्रॉम सोनीपत एंड currently I am living in Delhi. I have done my graduation in 2018 and I have done my MBA finance in 2020. From my campus, I got placed in ICICI Security. In this particular profile, I was working as a security dealer. I used to buy and sell shares on behalf of my clients. But sir, this is not the profile that I really wanted to work on. So I want to bring my career on track and I want to work only on this particular profile for which I am applying today. So I thought of enhancing my knowledge which are required for this profile, and I joined a 3 months of training program and I learned exactly the same skills for which you require. For example, sir, I learned how to prepare financial models, how to do the valuation of companies, how to do the merger acquisition analysis,
and this all I have done absolutely from scratch, very practically, because I prepared the financial models for multiple companies like Netflix, McDonald, Apple, Tata Motors, AP Corporation, and Kellogg's. These six models I have prepared absolutely from scratch, and I did the valuation of few companies using DCA valuation, trading comps, and transaction comp. Sir, I did not use the pre-built model template. I created those models first and then I used the company data and did the valuation. Same thing I did for merger equation. I created a model and I used two companies' data and merged them into one company. I did LBO model absolutely from scratch. And I also did project finance model of solar, real estate, and hotel construction. So, sir, this is what all I wanted to share with you. If you want me to speak on something in detail, then please let me know. सो अभी इस वीडियो में मैंने आपको एक सैम्पल इंट्रोडक्शन देके दिखाया. आपको इस इंट्रोडक्शन को लिखना है और 10 बार 20 बार प्रैक्टिस करना है, और हो सके तो सेल्फी मोड में अपने इंट्रोडक्शन को रिकॉर्ड करना है और इस रिकॉर्डिंग को सुनना है. जब आप अपने इंट्रोडक्शन को खुद सुनते हो तो आपको खुद से नए आइडियाज़ माइंड में आते हैं कि इस इंट्रोडक्शन में आप यहाँ से वहाँ तक की बातें कर सकते हो. ठीक है, ये भी बोल सकना चाहिए था, ये भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं, बट बहुत लॉन्ग इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए और बहुत शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, 1 से 1.5 मिनट का इंट्रोडक्शन ठीक रहता है. ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें. अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि रिज्यूमे कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि पहली वीडियो मैंने आपको बताया कि आपको अपना इंटरव्यू प्लान करना है और इंटरव्यू की प्लानिंग के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंटरव्यूअर के साथ आप डिस्कस करना चाहते हो जिसके बेस पर सिलेक्शन हो जाए. तो वो टॉपिक्स को आपको सीवी में भी रखना है, उन टॉपिक्स को इंट्रोडक्शन में भी रखना है और उन टॉपिक्स को अपने क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको रिक्रूटर को बताना है. क्लियर है? तो अब हम अगली वीडियो मिलेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि आपको अपना रिज्यूमे कैसे फॉर्मेट करना है और कैसे उसको फाइनेंस प्रोफाइल्स के हिसाब से रेलेवेंट बनाना है. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.